Okay, friends, so am I audible to you? Can you hear me? Okay, so there are some questions. Where to get PDF of syllabus of HPCL? सिलेबस का पीडीएफ देखो, जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वही सिलेबस एचपीसीएल का सिलेबस है जो 2023 का है. अगर आप टाइप करेंगे सिलेबस ऑफ एचपीसीएल 2023, इट इज गोना बी द सेम सिलेबस. इफ सम न्यू एडिशन इज देयर, वी विल लेट यू नो दैट. बट वही सिलेबस आप करना स्टार्ट करो. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट syllabus of HPCL in 2021 and 2022 was same, and 23 में some topics were added, and these were the topics which were added in the syllabus of HPCL. Some new topics were added and more questions came from those topics, and that is what we are going to cover it now. So HPCL का same syllabus, friends, you start preparing. That is how you have to do it. And IIT Bombay's energy science engineering from electrical, is it good decision? Wonderful decision. In fact, hello voice, your voice, एनर्जी स्टडीज आईआईटी बॉम्बे, एंड देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अहेड. मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट वीक, एक दो वीक पहले, प्रदीप का. जस्ट वॉच दैट वीडियो ऑफ प्रदीप. ही डिड हिज मास्टर्स, ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ही डिड हिज मास्टर्स इन एनर्जी साइंस, एंड देन ही वेंट अब्रॉड फॉर पीएचडी. नाउ इज वर्किंग एट अ वेरी गुड पोजीशन इन एनवीडिया. So friends, if you are ready to go in that direction, then it is a very good department. So 551, I think, OBC score electrical energy studies IIT Bombay you can take. That is yeah, so yes, that is very good voice. And still, if you have any doubt, you can call me on this number and you can talk to me. Let me give you the number. Okay, so this is the number I'm giving you, friend. You can talk to me after the class, maybe 6:30. You can call me after 6:30. Your voice, you can discuss with me and you can make up your decision. Yeah. Okay, good. So any question you have, you can discuss with me. You can call me and discuss with me. Make a right decision. And you have wonderful opportunities, friends. You have wonderful opportunities in the life. So nothing to worry. You can take those opportunities and you can go forward for that. So that brings us to now our class. Let me begin the class. So what we are doing is, friends, we are taking here the module of HPCL. YourPedia is the platform which every year comes out with the HPCL module, and there's a wonderful module that is you can prepare nicely and you can get the jobs. A lot of jobs are there in HPCL this year. For mechanical engineers, almost 100 seats, but that is gonna increase, in my opinion. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तैयारी करो, 4 महीने हैं तुम्हारे पास. अब ये जो मेरा वीडियो सीरीज है, ये सीरीज है उन टॉपिक्स के ऊपर जो नए एडिशनल टॉपिक्स हैं और कैसे तुम्हें तैयारी करनी है. सो मैं ये बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट अभी कवर कर रहा हूं. ऑलमोस्ट काफी इसके लेक्चर और क्वेश्चंस हो चुके हैं. उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा, तो आप इसको करते चले जाओ एंड कीप रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. नाउ टुडे आई स्टार्ट विद दीज टू क्वेश्चंस. ये एचपीसीएल लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से. वैसे तो 3 क्वेश्चन थे इसमें से, लेकिन ये 2 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे. सो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, which standard is adopted for implementing an effective environmental management system analogous to ISO 14001? So friends, this 14001 series जो है, environment management system क्या होता है, what is environmental management system EMS, वो मैं डिस्कस करूंगा. एंड ISO 14001 2015 सीरीज क्या है, तो वो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. तो देयर इज नथिंग लाइक ISO 14001 2017, देयर इज नथिंग लाइक दैट. तो ये तो है ही नहीं, ये सीरीज है आपकी. और इस सीरीज के अंदर क्या क्या है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम देयर. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड ISO 14001 जो आपका डील करता है आपका एनवायरनमेंट के साथ, एंड दैट इज आल्सो 2015 वर्जन. तो ये आपके 2 टॉपिक आज की क्लास में मैं कवर करूंगा. बहुत अच्छे नोट्स हैं जिनको आप गो थ्रू करना, और यहां से आपका जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है दैट विल बी फुलफिल्ड. Now, which of the following pollutant is primarily responsible for depletion of ozone layer? So, ओजोन अर्थ के कौन से एटमॉस्फेयर में होता है? तो सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फियर 0 से 10 किलोमीटर तक, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर 10 से 50 किलोमीटर तक. तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है. एंड ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब आती है
तो ओजोन लेयर उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करती है हमें, ओजोन वहां पे फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन एंड ओ एटम आपका ओजोन बनाता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन oxygen gets converted into ozone in the presence of ultraviolet light, and hence ultraviolet light is not coming on earth directly and protecting human being from cancer, skin cancer and all. So ozone has a role to play in that, right? So this is how it happens, and stratosphere में ozone होता है। now depletion of ozone के साथ कौन से pollutant हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैं, these are the two substances जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के साथ रिलेटेड हैं। सो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर मींस क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी आपकी गैसेस हैं, ये आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन को करती हैं। दैट वाज द क्वेश्चन। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, these are the pollutant which eventually leads to the rain, that is the acid rain, that also we discussed. Now let's discuss friends what is environment management system होता क्या है। इसमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है environment management system क्या है। तो अंडरस्टैंड करो कि ये environment management system basically is to be created by the organization। अगर मैं कोई organization चला रहा हूं, let us say National Thermal Power Corporation, NTPC. NTPC has an environment management system. Now what is the purpose of that? The purpose of environment management system is that my organization, my company follows the environmental laws. What are the environmental laws? India has many laws. We discussed other day about the Environmental Protection Act 1986, Air Act, Water Act, and so many other Act, Forest Act. So whether the organization is following the rules and regulation of the environment laws, so that is one thing. Next, the employees and the organization is following pro environment things or not. Are we violating some kind of environmental laws and all? Third is, are we basically protecting environment? So are we fulfilling our responsibility for that or not? So there are plethora, there are couple of things जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कुछ पर्पस होते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो रखती हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो आपका ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एनी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू एड्रेस इट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट in basically systematic and cost effective manner. What is regulatory mechanism? That I am to regulate my organization to follow the environmental laws and policies. इससे क्या होता है, अगर आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, अगर इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग द लॉज, देयर कैन बी पेनल्टी ऑन यू। तो रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस कम हो जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंप्लॉइज की इंप्रूव हो जाती हैं, एंड ऑल्सो इट एड्रेसेस द नॉन रेगुलेटरी। तो दो हमारे काम है, एक रेगुलेटरी थिंग्स, रेगुलेटरी मींस हमें लॉज को फॉलो करना है, रेगुलेटरी मींस कि जो भी कंप्लायंस है, जो भी हम लोगों को कंप्लायंस फॉलो करना है, हमें लॉज फॉलो करने हैं, उनको हम फॉलो करें। नंबर टू, हम हेल्थ और सेफ्टी को टेक केयर करें, वो भी रेगुलेटरी के अंदर आता है। नॉन रेगुलेटरी में क्या आता है, नॉन रेगुलेटरी के अंदर आता है जैसे एनर्जी को कंजर्व करना है, मेरे को बेसिकली इंप्लॉइज को अपने को सेंसिटाइज करना है। जैसे मैं अपने घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज जब नहीं हो रही है तो आई स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नॉन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, नॉन रेगुलेटरी बेसिकली अवर थिंग्स विच वी आर टू फॉलो, नॉन रेगुलेटरी इश्यूज। रेगुलेटरी इश्यूज आर कि मैं ट्री ना कट करूं, अगर मैं ट्री को कट कर दूंगा तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से मेरे को वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आंसर करना पड़ेगा अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं। सो रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना, रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? सो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? नंबर वन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का any organization has its own any organization has its own compliance which it is to meet. So environment management system of the organization helps to fulfill those compliance obligations. Number two, there will be environmental objectives and targets, and those
objectives and targets to meet the compliance and reduce environmental impact should be fulfilled. Third is to meet those objectives and targets, and we have to establish program for that. And then there's a monitoring to obtain those objects, and then awareness is to be generated, and then achieving the continuous improvement. So the couple of terms for environment management system you need to know is that you have to meet the compliance, objectives and targets, then monitoring should be there, awareness should be generated, achieving the objective should be there. ये जो मैंने सर्कल किए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स हैं. वाई एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड होता है? सर, हमें जो कंप्लायंस है उसको करना है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको मीट करना है. नंबर 2, हमें ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स को मीट करना है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को रिड्यूस करना है. हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है, मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को स्प्रेड करना है. ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ गोइंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, व्हाट इज अ पीडीसीए साइकिल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. पीडीसीए साइकिल क्या है? नाउ there is a term called continuously improving the performance, continuous improvement of the environmental performance, and the system is to repeat the cycle. तो पीडीसीए का हर टर्म का एक मतलब है, प्लान, डू, चेक, एक्ट. प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग, एक्टिंग. So when you do that in a cycle, then there is a continuous improvement. तो हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक टर्म भी यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड काइजन. दैट टर्म इज कॉल्ड काइजन. सो देयर हैज टू बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एंड दैट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कम्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन अ साइकिल, एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड पीडीसीए साइकिल. प्लान, डू, चेक, एक्ट, दैट साइकिल इज देयर. तो क्या है वो साइकिल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट साइकिल? ओके, नाउ सी दिस, व्हाट डू वी प्लान? So planning is like we should know what are our obligations. हमें क्या करना है? What as organization we need to do? What are our objectives? What we need to meet? What are the environmental objectives? How we can meet those objectives and what we should do? So planning means as organization what environmental compliances, obligations and objectives I should fulfill. We are talking about environment management system to be used in the organization. We are talking about how environment management system should be used in the organization. So in that particular planning, we should first of all, we should plan that what objectives, environmental objective we should meet. कि किसी भी organization को क्या objective meet करना है, that is the first, that is called plan. उसके बाद आता है do. Do means execute. Do means execute. Now how to execute that? We should have a resource to complete that. We need to generate awareness. We need to have a communication system with the people who are working in that. We need to find out the operational management. We have to do that. That means whatever we planned, now we are going to implement that. That is the second stage. Third is monitoring. So monitor, measure, evaluate and see whether we are meeting our targets or not. That is called check. Plan, do, check and act. Act means अगर हमें कोई नॉन कंफॉर्मेंस लगता है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा. एक्शन लेना पड़ेगा, मे बी वी विल चेंज द प्लान एंड विल गो फॉरवर्ड अगेन फॉर द न्यू टारगेट्स व्हिच आर टू बी सेट. सो ये सारे का सारा एक साइकिल है. सो इफ यू सी प्लान, डू, चेक, एक्ट एज एक्टिंग एज अ साइकिल, एंड द पर्पस ऑफ दिस साइकिल इज, this is the purpose is continuous improvement, so that I keep on improving my entire thing continuously. That is the purpose of this entire cycle, plan, do, check, act. So now we are coming to friends. So whenever there is an organization, first of all, organization will plan and set the objective and targets. So it will first make the policy, objectives or targets. So organization will first of all make a target that this is what I want to achieve. In the environment management system, the first thing which any organization will do, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, एक अपने लिए टारगेट रखेगा, एक पॉलिसी बनाएगा
that this is what I want to achieve. After that, next step is the implementation part. Now what is implementation part is, so whether I am meeting the objectives or targets or not. So what objectives and targets I am meeting, that is a second stage. And if the targets are not met, then corrective action is to be taken. I want to take the corrective action in that particular case. And then evaluation is to be done, review is to be done, and we will see whether environment management system is properly working or not. And if that is done, then continuous improvement will be observed. So plan, do, check, act actually will work in a cycle. So plan, do, check, act, these are the four basically activities which are done in a cycle, and these activities are to be done something like this: plan, do, check, act. These are the four activities which must be done something like this. So this is what is the environment management system of the organization, और इसी तरीके से उसको आगे एक्टिविटीज करना होता है. So I'm sure friends, the first part, little part for the lecture today was environment management system. दोबारा समझ लो इसको. Environment management system, as the name shows, it is the management system of the organization which is created to make sure that environment concern of the organization are met. Organization कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे environment harm हो रहा है, environment pollute हो रहा है, and the responsibility of the organization to take care of the environment is basically fulfilled. That is called environment management system. Now in the environment management system, there are certain activities which are to be done, and those activities are done in a cycle, and the activities are plan, do, check, act. Planning is done, then execution is done, then monitoring is done, and then if there's a requirement of review or change of the plan, again it is done. That is the environment management system. Now ISO 14001:2015, it is basically the framework for EMS, and that is developed by International Organization of Standardization, which is ISO, and the most commonly used framework is ISO 14001:2015. So environment management system के लिए एक framework बन गया. ISO ने बनाया है, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लेकिन ISO ने जो फ्रेमवर्क बनाया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने जो फ्रेमवर्क बनाया है, दैट इज ISO 14001:2015. अब ISO 14001:2015 कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1996 में बना था. ये 1996 में बना था, और ये ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो प्लान, डू, चेक, एक्ट मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. तो क्या क्वेश्चन आएगा कि ISO 14001:2015 किससे रिलेटेड है? आंसर इज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है. सेकंड आएगा, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था. तीसरा आएगा, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो प्लान, डू, चेक, एक्ट के ऊपर ये बेस्ड है. इट इज बेस्ड अपॉन प्लान, डू, चेक, एक्ट. अब 5 मेन स्टेजेस EMS की क्या हैं? व्हाट आर द 5 मेन स्टेजेस जो ISO 14001 में लिखी हैं? वो 5 मेन स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले स्टेज, और आपको बस नाम याद रखना है फ्रेंड्स, इनके जो स्टेजेस हैं 14001:2015, these stages are nothing but related to plan, do, check, act में जो हमने बात किया वही स्टेप्स हैं 14001:2015 के. नंबर 1, let's make a policy. So let's make environmental policy. So organization का एक environmental policy होना चाहिए. Organization का environmental policy होना चाहिए, which is the foundation of environment management system. So there should be environment policy of the organization. Organization का एक environment policy होना चाहिए जो कि foundation होता है environment management system का. दूसरा policy बन गया, then second stage should be planning. Planning means ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की बेसिकली एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर आपको उसका प्लानिंग करना है. विच एस्पेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट? सो फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट. एनवायरमेंटल एस्पेक्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई. आफ्टर दैट देन which aspects are significant, you need to identify that. So what is happening in the planning? कि environmental aspect क्या हैं? Environmental aspect means
आई कैन डू मैनी थिंग्स फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूँ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या एनवायरमेंट को अपने को हार्म ना किया जाए। लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशन मैं किस पे फोकस रखना चाहता हूं, मैं कौन से एस्पेक्ट पे फोकस रखना चाहता हूं, which aspect I want to focus in an organization, that is something which I am to see. So in the second stage of planning, I need to identify the environmental aspect of my working and operation, which aspects are to be seen, and then I identify which aspects are most significant, कौन से aspect बहुत ही significant हैं. After that I will set up the objectives and targets. So I will set up the objectives and targets of my organization. So this, after I made a policy, I will plan on these things. मैं इन सब चीजों के बारे में प्लानिंग करूंगा कि मेरे को किस चीज के ऊपर मैंने टारगेट बनाना है, मेरे को किसको ढंग से एस्पेक्ट को फोकस करना है, और मैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट को बनाऊंगा. दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्लानिंग. एंड देन आई एम टू डिवाइसिंग द एक्शन प्लान. डिटेल में मैंने प्लानिंग किया. सो व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ ISO 14001-2015. सबसे पहले मैंने पॉलिसी बनाया ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद मैंने उसका प्लानिंग करना स्टार्ट किया. विच एनवायरमेंट एस्पेक्ट आई एम टू फोकस, कैसे उनको मेरे को कंट्रोल करना है, वो मैंने डिटेल प्लान बना लिया. तीसरा फ्रेंड्स आ जाता है राइट, थर्ड इज इंप्लीमेंटेशन पार्ट. जो भी मैंने एक्शन प्लान बनाया है, अब यूजिंग माय रिसोर्सेज, whatever action plan I have made, now using the resources, human resource, financial resource and all, I should basically now try to implement and try to execute and try to fulfill the objective. And training and awareness of the employees training, employee awareness, all those things I am to focus. So implementation part will start. I will start the implementation part now. That is the third stage, which is the implementation stage. So first is policy making, second is the planning, third is the implementation, which is like do. PDCA में जो D आता है, जो do आता है, वो मेरा तीसरा पार्ट है उसका implementation part. And fourth is the evaluation. Now monitoring of the operation and whether objectives are fulfilled or not, that is called evaluation part. And fifth आता है review part. Review means I need to see that the evaluation, after the evaluation, I am meeting the targets or not. If they are not met, then I can create the loop and again plan for the things. So see, what are the 5 stages now? One is policy making. After the policy is making, let's plan, then let's implementation or do part, implementation, and then evaluation, and then review, So these are the stages or the steps which are used in ISO 14001-2015. These are the stages which are done: policy, plan, implementation, evaluation, review. This is how, friends, this is done. Policy, plan, implementation, evaluation, review. This is how this all is done. So this is what we were doing. We were doing ISO 14001-2015 में what are the various stages, the 5 main stages of environment management system defined by ISO 14001 are this: commitment and policy, planning, implementation, evaluation, and review. That is how it is done. Now let's answer a couple of questions, friends. The first question we must answer is, why is ISO 14001 important? Why is ISO 14001 important? इसकी importance क्या है? Why is this important? Okay, why ISO 14001 is important? Okay, so let's go for, friends, most important is we need to enhance the environmental awareness, environment consciousness, and global challenge of climate change. इसलिए important है.
ISO 14000 इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर वन, एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वी नीड टू प्रोटेक्ट प्लेनेट अर्थ फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, and hence we need to generate the awareness, we need to generate the consciousness, people need to be made aware about this challenge. ISO 14001 is doing the same thing. ISO 14001 इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को बोलता है दैट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अवेयर करो. सो स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, making people sensitive that environment needs to be protected is the first need of such kind of certifications or ISO 14000. Now regulatory compliance are very very important. So when we adopt this standard, organizations actually are to meet the regulatory compliance. So we need to protect the environment and environment needs to be improved. So ISO 14000 is offering a structured approach for the business to address these concerns. So regulatory compliance meet करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को ये बताने के लिए that you are to fulfill some environmental obligations, regulatory compliance, there is a structured approach to do business. Second is environment management system leads to some kind of tangible benefits, जैसे वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, कॉस्ट सेविंग. सो व्हेनेवर यू आर following environment management system, does it give any kind of profit to the organization? Answer is yes, there are tangible benefits. What are those benefits? Number one, it gives you reduced wastage. I mean wastage gets reduced. कौन सी wastage? आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की वेस्टेज कम हो जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है और कॉस्ट आपकी सेव होती है, कॉस्ट सेविंग होता है. तो ये भी एक पॉइंट आ सकता है कि क्या एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से बेनिफिट होता है? आंसर बिल्कुल होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है. अगर आप अपना कंप्लायंस फुलफिल करोगे, अगर आप एनवायरमेंटल कंप्लायंस फुलफिल करोगे, और कैसा बेनिफिट होता है? तो आप बोलोगे कि मेरे को कॉस्ट रिडक्शन में बेनिफिट होता है, कॉस्ट सेविंग होता है मेरा. ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़ता है, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बढ़ता है और ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन में, ग्लोबल ट्रेड में फायदा होता है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रही है, इफ सम ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग द एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, then obviously global trade can be facilitated. The countries, different countries will not put restriction on you. आपने कई बार सुना होगा that इंडिया से ये प्रोडक्ट आपका यूरोप में नहीं बेचा जा रहा बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज थिंक दैट दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय हार्मिंग एनवायरनमेंट. आपने एनवायरनमेंट को हार्म किया, आपने ट्रीज को कट किया एंड देन यू मेड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो वी विल नॉट परचेज इट फ्रॉम इंडिया. सो इफ यू फॉलो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन और ISO 14001 2015 in our organization, the reputation of your organization goes up. So one of the reasons why you want to take this international certification is that reputation of your organization goes up. That is very very important. Now ISO 14001 is basically nothing but it is the organization's dedication to sustainable future in which the environmental responsibility and the business growth gets mixed. So environmental responsibility and business growth are both basically blended together and that is the advantage of ISO 14001. तो ये है ISO 14001 का अल्टीमेट जो बेनिफिट मिलेगा, सस्टेनेबल फ्यूचर होगा, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिजनेस ग्रोथ के साथ आप मिक्स कर सकते हो. तो बोथ शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर, both can simultaneously be obtained. Environmental responsibility with strategic business growth can be obtained. These two things can parallelly go. Okay, let's go now. What are the main benefits of implementing ISO 14001? तो क्या बेनिफिट होगा ISO 14001 को इंप्लीमेंट करके? Yes, environmental performance will get enhanced. How? Waste will be reduced, resource consumption, pollutant emission will be basically minimizing the environmental footprint. Minimizing environmental footprint. That means wastage will be reduced.
Okay, so minimized environmental footprint means the wastage will be reduced. Then regulatory compliance. There are different regulatory compliance by government. If you do not fulfill, then there can be fine, there can be penalty, there can be legal action. So fine, penalty, legal action will not be there. अगर आप ISO 14001 2015 को कंप्लाई करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, इफ यू इंप्लीमेंट दिस, तो ये बेनिफिट है, रेगुलेटरी कंप्लायंस आपके होते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टी नहीं लगती, आपके ऊपर फाइन नहीं लगता. दिस इज द अनदर एडवांटेज विच यू हैव. थर्ड, आप कॉस्ट सेविंग करते हो, नो डाउट अबाउट दैट, कॉस्ट सेविंग इज देयर. एफिशिएंट रिसोर्स यूज करते हो, वट एवर रिसोर्स यू हैव. सी रिसोर्स आर ऑलवेज लिमिटेड, सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिसोर्स विद यू, human resource, capital resource, monetary resource, machine resource, electricity is also resource. Now if you are not misusing the electricity or if you are not misusing the resources, then you are doing the cost benefit to the organization, cost saving is there, wastage reduction is there, and eventually it is helping the environment properly. And then stakeholder and customer trust. There is a trust which customer will get. Stakeholder means the people who are having businesses with you, the people who are dealing with you. There's a green initiative, so there is the reputation, you will have better reputation and loyalty among stakeholders and customers. तो जितने भी आपके customers हैं, जो भी आपके vendors हैं, the people with whom you are dealing, if you are protecting the environment, तो आपका reputation, आपकी authenticity, आपका brand will get promoted in all these people. People will trust on you, they will trust that okay, this organization is pro environment, so they are good people, this is a good organization. Okay, risk management. अच्छा, एक बात, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें आप जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी यू टेक, on the website of that company if you go, they will surely say that we are ISO 14001 certified and we follow the all norms and all the obligations which are required by environment. हम उनको सबको फुलफिल करते हैं. तो जितने भी कंपनीज है वो सब बोलेंगे कि हम इनको फुलफिल करते हैं एंड कंप्लाई करते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. एनवायरमेंट रिस्क को असेस करता है, आइडेंटिफाई करता है और मैनेज करता है. ये तीन टर्म्स हैं फ्रेंड्स. ISO 14001 जो है वो आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, मैनेज करता है. आइडेंटिफाई मींस ये रिस्क है, असेस मींस उसकी असेसमेंट करता है कितना ग्रेव है, मैनेज मींस मिटिगेट, मैनेज, कंट्रोल. सो रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट रिस्क का. ISO 14000 डज दैट. एंड देन ऑपरेशनल एक्सीलेंस. मैंने आपको बताया PDCA, प्लान डू चेक एक्ट. दिस PDCA इज द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. PDCA इज द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. तो हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं इसके अंदर. सो ये आपके सारे के सारे फ्रेंड्स ये ISO 14001 के बेनिफिट्स हैं. व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग ISO 14001? व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग? So you will say, okay, enhanced environmental performance, regulatory compliance, cost saving, customer trust, stakeholder, risk management, operational excellence. Okay. Now friends, I want to discuss with you something about conference of parties. हमने United Nations Framework Convention on Climate Change की बात की थी. I discussed this particular thing with you. I told you that there was a Earth Summit in 1992. That is also called Rio de Janeiro Summit, Earth Summit or Rio de Janeiro Summit. So that was in 1992. That was the first summit जिसमें climate change की बात चली, जिसमें people said that okay, there is something which is called climate change and it needs to be controlled. And in that Earth Summit in 1992, something was born, and that something which was born was United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Now this United Nations Framework Convention on Climate Change, it is the common platform where the meeting of countries take place and discussion goes on for protection of the environment. Now that particular discussion and that particular group is called Conference of Parties.
So discussion of various parties related to environment is happening on this platform, which is called Conference of Parties, COP. It is called Conference of Parties. And United Nations Framework Convention on Climate Change, which was born in 1992, during Earth Summit. तो अर्थ समिट, जिसको रियो डी जेनेरो समिट भी बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन रियो समिट, अर्थ समिट 1992. वो उसमें दिस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज बोर्न, एंड दिस इवेंचुअली लीड्स टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, दैट हैपेंस अंडर द एम्बिट ऑफ United Nations Framework Convention on Climate Change. This is a supreme decision-making body, basically related to the climate change decisions. So COP का सेक्रेटरिएट कहां है? बॉन, स्विट्जरलैंड में. So every year there is a conference of parties. First COP कब हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में. So first COP 1995, Berlin, Germany. Right, friends? So first COP, Conference of Parties, took place in Berlin, Germany, 1995. Okay, let's now talk about the COP and its major sessions, major outcomes. Some important COPs. So Conference of Parties are done under United Nations Framework Convention on Climate Change. So every year Conference of Party takes place in one country or the other, and some Conference of Parties are very, very important. First Conference of Party took place in 1995. United Nations Framework Convention on Climate Change conducts these Conference of Parties. United Nations Framework Convention on Climate Change was born in 1992. First summit on global warming and climate change took place in Rio de Janeiro, Brazil, 1992. अब जो पहली सीओपी हुआ था वो बर्लिन में हुआ था. सीओपी का जो हेड ऑफिस है, जो इसमें सारे के सारा डिस्कशन होता है, दैट इज इन बॉन, स्विट्जरलैंड. पहला हुआ था बर्लिन, जर्मनी में 1995 में. और कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये है. सीओपी 3 1997, कोयोटो प्रोटोकॉल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लीगली बाइंडेड डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन. सो कोयोटो प्रोटोकॉल 1997 में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था कोयोटो में. उसमें कोयोटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था. इट डिड नॉट कम इन फोर्स, इट केम इन फोर्स इन 2005, बट अडॉप्ट किया गया था. जब ये अडॉप्ट हुआ तो उसमें लीगली बाइंडेड डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस द एमिशन टारगेट्स. सो कोयोटो प्रोटोकॉल वाज ओनली बाइंडिंग द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ नहीं बोला. डेवलप्ड कंट्रीज को बोला कि आपके ऊपर एमिशन टारगेट्स को रिड्यूस करने के लिए हम एक आपको ऊपर बेसिकली एक टारगेट सेट करेंगे. सो लीगली बाउंड टारगेट्स ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीओपी 8 इंडिया में हुआ था. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात किया गया था. सीओपी 8 जो हुआ था 2002 में, वो दिल्ली में हुआ था. तो दिल्ली में कब हुआ सीओपी? दैट वाज इन 2002. Right? Okay, then we go to COP 13, COP 14 Poland, COP 15 not very important, COP 16 Cancun. COP 16 में एक फंड बना था जिसको बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड.
कैनकन मैक्सिको, ग्रीन क्लाइमेट फंड कब बना था? यू शुड नो ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था इन मैक्सिको 2010 में. And now COP18 is very important. Doha, Qatar. Doha Amendment to Kyoto Protocol reduce the greenhouse gas emission by 18% compared to 1990 level. ये दोहा के ऊपर जो बना था COP18, that is important. Kyoto Protocol is very important, followed by Doha. Doha said, okay, let's reduce the greenhouse gas emission by 18% compared to 1990 level. That is called Doha. Then COP19. Right? Then COP21, Paris. Paris Agreement is very, very important. So after Kyoto, 2015 Paris Agreement is very, very important. What was important? So Kyoto Protocol is COP3, took place in 1997. Developed countries were given a target. That is all about Kyoto Protocol. Now, Paris Agreement, very, very important. Paris Agreement 2015. It said that global temperature should be 2 degrees below pre-industrial times level. Another thing, $100 billion fund to be created by rich countries. Rich countries will finance global warming in the finance the protection of the planet from global warming by helping poor countries. So that fund is $100 billion fund. That is the Paris Agreement. Very, very important agreement, friends. Paris Agreement. And then Glasgow 26. Glasgow 26, COP 26. Net zero targets given by 2070. India said by 2070 we will attain net zero. मतलब जितना कार्बन आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना कार्बन आप कंज्यूम कर रहे हो. That is called net zero. So India's target for net zero is 2070. That is called net zero target. Now, COP 27, Sharm el Sheikh, Egypt. It took place in Egypt. So, COP 27 में it was loss and damage fund. Loss and damage fund. Mangrove Alliance by India. So you see, India has started playing more crucial role now in COP rounds. So that is Mangrove Alliance, Sharm el Sheikh, Egypt में हुआ था 2027 में. Then 28th COP took place recently and it was held in Dubai, United Arab Emirates. 28. COP 28 कहाँ हुआ था? This was the latest which took place in Dubai in UAE. COP 28. It was the Paris Agreement was in 2015 and World Climate Action Summit was 28 COP 28. So whatever Paris Agreement we discussed in 2015, in COP 28 we discussed the performance on that. World leader discussed about the progress made on Paris Agreement. Paris Agreement 2015, what is the development, what is the growth or progress on Paris Agreement that was discussed in COP 28, which is called World Climate Action Summit. That is called World Climate Action Summit.
So what are the highlights of COP28? Why I'm saying COP28 is very important. Why COP28 is important? Because this is the latest conference of parties. कहाँ हुआ? दुबई में हुआ. इसमें वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ. वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट. Top leaders came together and they discussed about the growth which has happened. Loss and damage fund. Some of the highlights of COP28. एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा टू कंपनसेट द कंट्रीज विच आर फाइटिंग विद क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट. To compensate the countries which are fighting with climate change. World Bank will be the interim host of this fund. Developing countries and least developed countries can basically seek some kind of benefit through this. This is called loss and damage fund. ये नाम आ सकता है एग्जाम में. This name can be asked. Loss and damage fund. What are some more highlights of COP28? Triple nuclear energy capacity by 2050. So as we talk about Nuclear Power Corporation of India Limited, nuclear energy should be more or less. So COP28 says that to reduce the impact of fossil fuel or global warming, the nuclear energy should be tripled. The nuclear energy requirement, nuclear energy should be 3 times capacity, triple global nuclear energy capacity by 2050. France started what we call coal transition accelerator. कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर. फ्रांस ने इसकी बात की. ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एक टेक्स्ट बना दैट वी शुड नॉट लेट टेम्परेचर इंक्रीज 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल. जो प्री इंडस्ट्रियल एरा में टेम्परेचर होता था अर्थ का, उससे 2 डिग्री से ज्यादा मत जाने दो, अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस द डिजास्टर. So that is, global goal on adaptation. That is called global goal on adaptation. United Nations Conference on Trade and Development said that $500 billion should be given by developed countries to developing countries in the form of aid or something. Right? New collective quantified goal. What is new collective quantified goal? That is 500 billion. Exam mein question can come, how much is the new collective quantified goal? Answer is $500 billion. That is $500 billion US billion dollar. That is a new collective quantified goal for climate finance. That is for climate finance. What is Global River Cities Alliance? Now, National Mission on Clean Ganga. That is India's perspective. It was launched by COP28, led by National Mission on Clean Ganga under Ministry of Jal Shakti. तो COP28 ने क्या क्रिएट किया? Global River Cities Alliance. ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस. इंडिया के अंदर एज यू नो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. उसी नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के बेस पे इन COP28 which took place in Dubai, we talked about global river cities alliance. India helped world countries create this. And how many countries are involved in this? 11 countries. To sustain the river-centric development. River-centric development. India launched Green Credit Initiative. India also launched Green Credit Initiative in COP28. Green Credit Initiative in COP28. Where it will be participatory global platform to exchange innovative environmental programs. So what are the two priorities of this initiative? Water conservation and afforestation. Water conservation and afforestation.
Global River Cities Alliance. Okay, now let's answer some questions, friends. Let me give you these questions. First is, what is Conference of Parties? Answer is supreme decision making body related to convention, related to basically environment. So supreme decision making body related to environmental domain is Conference of Parties. It meets under the aegis of United Nations Framework Convention on Climate Change. क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? Basically to see how different countries are performing on the environmental objectives. We have different environmental objectives, so different countries, how different countries are performing to meet the targets of environment. अलग अलग environment targets को meet करने के लिए अलग अलग countries क्या काम कर रही हैं वो उसके ऊपर discussion करना. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां हुआ था? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां हुआ था? बर्लिन में 1995 में. 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां हुआ था? पेरिस में. थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां हुआ था? दैट इज कोयोटो में. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बर्लिन, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोयोटो, 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पेरिस. कब हुआ था ये? 2015. सो व्हाट वाज द मेन एम ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो 2015 में हुआ था? उसका मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट वाज टू अचीव द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड. global warming should not be it should not be allowed to go beyond 2 degree centigrade, to keep it below 2 degree centigrade. इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का क्रिएशन था. इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज क्रिएटेड बाय इंडिया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस and Holland, the prime minister of France, president of France, sorry, in Paris Agreement. During Paris Agreement, this International Solar Alliance was created. So International Solar Alliance was part of that. So 12th Conference of Parties related to Convention on Biological Diversity took place in Korea. 11th meeting of Conference of Parties that took place in Hyderabad. Right? Let's go for this question, friends. पेरिस एग्रीमेंट का सेंट्रल एम क्या था? व्हाट वाज द सेंट्रल एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट? टू स्ट्रेंथन ग्लोबल रिस्पांस टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज. स्ट्रेंथन. पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, तो उस टाइम तक क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो चुका था. क्योटो प्रोटोकॉल का 2008 से 15 के बीच में, 8 से 12 के बीच में टारगेट मीट होने थे, मीट नहीं हो पाए. तो जब क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट मीट नहीं हुए, तो पेरिस एग्रीमेंट वाज बेसिकली सॉर्ट ऑफ एनालिसिस पेरिस एग्रीमेंट में टू थिंक अबाउट हाउ एवरीथिंग इज गोइंग. सो पेरिस एग्रीमेंट 2015 was done to strengthen the global response to threat of climate change. I think we ended up the session now. So friends, this is all about the topic which we discussed. Conference of Parties बहुत important topic है, environment management system बहुत important topic है, and ISO 14001-2015 is very important topic. If you guys are preparing for exam of HPCL or exam any environmental related exam, please prepare these topics. YourPedia is a dedicated platform created for environment, और environment से related जितना भी domain है YourPedia के ऊपर available है. अगर आप किसी भी तरह का environment से related
higher educational opportunities like GATE, NET, you are writing for environmental sciences, or if you want to go abroad, foreign university for environment domain, or if you're writing any exam, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board, or public sectors, then you can prepare with mentors of YourPedia, and all the topics are available on that particular platform. You can take benefit of that and you can prepare really well for that. Now I ended up the session here. Regularly classes are going on for HPCL and for other environmental topics. Keep attending our classes. Thank you.